Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yeah, we are ready to start. Guys, students, I sent you a mind map of this chapter yesterday. Did you receive? Mind map means all the formulae collection. Circular motion, entire formula list. Did you receive it? Perfect. That's great. Okay, Gitesh. Today, I'm working on the notes, short note of the chapter, so that it will be used. So I'll be sending you that as well. So let's begin. Can you just tell me what was the last thing that we discussed? Can you tell me what was the last thing we discussed, guys? Quickly. We can pick up exactly from there. Will that be okay, everybody? Any doubt in last lecture? What have we conducted? So what I wish to do is I wish to finish off circular motion, most of the part today, and then discuss with you some questions. We'll be sending you a question list and short note of this chapter after the lecture. So please make sure you go through short note and solve as many questions as we can. Last time I had sent a sheet. Is that done? Is that sheet which was sent completed by you guys? Right? Okay, perfect. Let's go ahead then. All right, everybody. Please keep communicating, everyone, so that it helps me in understanding you and then tweaking the codes according to that. If you could keep responding, that will help. Here we go. Net acceleration, we discussed about it. Yes, I am right. Okay, I'll be sending you a short note of this chapter and questions. Please try to solve them as much as possible by you. Okay, guys? Let's begin after the part that we've discussed. Net acceleration, beyond that, we are going to discuss today. Just give me a minute to reach to the right point so that we start from the place we entered.
One more minute, guys. Why is it taking so much time for file to open? Yeah. So I'll just revise what was done last class and we'll proceed from there. Here we go. I hope you remember this was the last thing that we discussed, right? Net acceleration, radial and tangential. Okay, we have talked about which acceleration changes what. Can you tell me radial acceleration changes only what? Radial acceleration changes only what, guys? Radial acceleration changes only radial acceleration changes only direction of velocity. That's correct. Direction of linear velocity. Let's be very specific. It changes only direction of linear velocity. Okay, direction of linear velocity. There are two velocities, Mahek, right? There are two velocities, right, Sahil? It only changes direction of linear velocity. Are we clear? Are we okay with this? Perfect. Good. Nice. Okay. थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन को और अच्छे से लिखते हैं. Let's try to write it a little better so that it helps. I'm sending you short notes as well. मिल जाएगा आपको? You'll get short note in a minute, people. Yeah. So let's talk about all the expression. Hopefully you remember this. Any problem with this, people? Hopefully you remember this. Right, everybody? Okay, then we know magnitude of this, everyone. Correct, right. Then we said, okay, AR का magnitude क्या होता है? AR का magnitude होता है, people, omega square R, and AT का magnitude होता है R alpha. Do you remember that? Wonderful. This can also be written as V square by R, by the way. Right, everyone? Easy and simple and straight. Good. Then what we did,
We talked about uniform circular motion and non-uniform circular motion, right, everyone? Did you receive notes, short note of this chapter? Wonderful. Look at it. उस पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है बच्चों. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है, क्या नहीं कांस्टेंट होता है, चेक. नहीं मिला, कुछ बच्चे बोल रहे मिला, कुछ बोल रहे नहीं मिला. कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मिल जाएगा. सुहानी सबके ग्रुप पे आ जाएगा बेटा. आप लोग का अलग अलग ग्रुप है ना शायद. You'll get the seat, don't worry. या फिर जिनसे भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे फॉलो, सुनील सर से फॉलो अप कर लीजिएगा, मिल जाएगा बेटा. I generally send it to Sunil sir. He will forward to you. Don't worry. You'll get it. I'll be sending questions as well today. ठीक है, bye bye, हो जाएगा. All right. Can you proceed, everyone? Shall we proceed, people? You're okay up to this? Can I go ahead? Shall I go ahead? People, please respond. Can I go ahead from here? All right, good. अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था, just to remind you, यहाँ पर मैंने आपको ये भी बोला था कि ओके, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आर अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, करेक्ट. ये हो जाएगा आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस omega raised to 4r square. R will be taken out. This is square root of alpha square plus omega raised to 4. This is total acceleration. We wrote this, right? Last class. ये हमने लिखा एक्सप्रेशन गाइस. अगर नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए, काम आएगा. Can I proceed, people? Shall I proceed? Right? Can I go ahead? Shall I go ahead? Right. This is the difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion. Please note it down.
Have you done? Perfect. Okay, guys. Can we try this question? Can we try this question, everyone? Let me help you a little. Let me help you before actually you get into it. तो people कौन सा acceleration खाली speed change करता है? Speed मतलब magnitude. Speed मतलब magnitude. कौन सा acceleration है जो खाली speed change करता है, everyone? Oh, it was done in last lecture? Okay, people are saying it is done. Sure. Because I don't, yeah, okay, Sahil. What about this? Was it done? Was this done? Okay, so we'll try this. Let's try this. Now, let me give you a couple of hints here. Let me give you a couple of hints which will be very, very useful to you. What is the height it travels? What is the height it is traveling, people? This height you can see is 4 meter. अब यहाँ पर जो tangential acceleration होगा, the tangential acceleration here will be actually g. Tangential acceleration is going to be g, and radial acceleration, this one, radial acceleration is going to be v square by r. But ये तो है नहीं हमारे पास, क्या करें? तो हम लोग बोलेंगे अच्छा, half mv square is equal to mgh. Do we know this? Do we know this? Energy conservation. Do we know this, everyone? Half mg square is equal to mgh. बस फिर क्या करना है? फिर तो m को कैंसिल कर दो. v square is equal to 2gh. फिर r से डिवाइड कर दीजिए. v square by r is equal to 2gh by r. अभी टोटल एक्सेलरेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन. ये है रेडियल एक्सेलरेशन, एआर. टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ AR square plus AT square. Can anyone solve it and give me an answer? Come on, everybody. Almost everything I have given here. Can you solve it and give me the answer? Can anyone solve it and give me the answer, everyone? Please give the answer. Can we go ahead, people? Shall we go ahead? Tell me the answer. चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा 2
जी को ऐसे ही पढ़ देता हूँ, बाद में 9.8 रख देंगे। जी एच कितना है 4, ये कितना है 2, 2 कैंसिल, दिस इज 4G। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 4 into 9.8, that will be 39.2. I hope you understand this. ये है 9.8. Do you get it people? जी का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेते हैं। आई होप यू नो दैट। समझ में आया सबको? अभी टोटल कितना आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? People, I want the net answer. This will be square root of 4G का स्क्वायर प्लस दिस इज G का स्क्वायर। G को बाहर ले लो यार, क्या ही करना है। तो G को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर जाएगा G स्क्वायर रूट के अंदर 16 plus 1, which is this is 9.8, and this is square root of 17, which would come out to be what, 4.125 or something, 4.12. So 9.8 into 4.12, whatever it is. Is this okay, guys? Is this fine? Are you all with me? Guys, respond. Only 3-4 people respond यार, उसमें भी कम responses। फटाफट, नहीं समझ आया तो हाँ बोल दो and I'll quickly explain. Done. Great. Thank you. चलो खत्म करते हैं। Hopefully you understand this. Is it okay, everybody? Is it fine? Can I proceed? Shall I proceed? Wonderful. Great. And I need more people to respond. Okay, Kitesh. And Joshi, I hope you have understood. Anushka Yadav, good. Arhum, I hope you understand. I hope it is their name also. Right, this was about acceleration. Perfect. We are proceeding to the next part. I'm aiming to finish off circular motion today. Let's see if we can. This will help us in doing rotational motion in more detail. Center of mass हुआ है बच्चा आपका? Have you done with center of mass?
सेंटर ऑफ मास हुआ है क्या आपका? सेंटर ऑफ मास डू यू नो? बिकॉज वो लगेगा हमको, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके ठीक है अनुष्का, राइट बेटा। सर्कुलर मोशन इज एनालॉजी टू लीनियर मोशन। सो आपको ये सारे इक्वेशन पता होने चाहिए। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, all those equation we should know. ठीक है, so far so good. Are we done? Finish it, please. Please finish it. Wonderful. All right, let's go ahead. Now, people, I'm sure you remember it well. I told you how to convert 1 RPM is equal to how many radian per second? 2 pi by 60 radian per second. इस क्वेश्चन में वही निकालना है बच्चों। So 3000 RPM equal to कितना हो जाएगा? Which one is the answer, guys? Which one is the answer? अब टाइम 1 सेकंड बोला है तो 1 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है सबको? आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट? Answer is easy, clear, no problem whatsoever. Great. Can we go ahead, people? Shall we go ahead? Nice, great. I mean, it's very simple, very simple. There's hardly anything in that. Great. Can you try this? ये हमने किया भी हुआ है, but बता सकते हैं क्या? Which hand is this? Minute hand, right? Minute hand का कैसा है? 60 minutes में एक सर्कल खत्म होता है, राइट? 60 मिनट्स में एक सर्कल खत्म होता है, मतलब कितना? 2 पाई रेडियन। तो 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? विच वन इज द आंसर? एब्सोल्युटली, यहाँ पे डिवाइड बाय 3, यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3, राइट? सो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, perfect path, perfect Aram, very good. Nothing in these questions, nothing.
गुड, राइट महक, कैन यू ट्राई दिस? यू टर्न का मतलब होता है कितना एंगल। अगर एक गाड़ी यू टर्न लेती है, ऐसे जा रही है और यू टर्न लेती है, तो कितना एंगल बच्चों? व्हाट इज द एंगल ट्रैवल्ड? व्हाट इज द एंगल ट्रैवल्ड? ओह, ओमेगा टी। सीरियसली सुहानी, एंगल दिख नहीं रहा है क्या आपको? ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई रेडियन। राइट और नॉट पीपल? आधा सर्कल कंप्लीट किया ना। हाफ सर्कल मतलब कितना रेडियन? ओह, डोंट से रेडियन प्लीज। रेडियन ये चैप्टर में नहीं चलता है, सॉरी डिग्रीज नहीं चलता है इस चैप्टर में, रेडियन में बोलना पड़ता है, ठीक है? पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन, दैट्स व्हाट वी हैव टू से, पाई रेडियन। या ओके साहिल, नो वरीज बेटा, ठीक है। अब वो 4 सेकंड में बोला है यार, कौन सा आंसर? तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, एवरेज के लिए। तो ये हो जाएगा थीटा पाई, और ये 4। बात खत्म हो गई, पाई बाई 4 रेडियन पर सेकंड, सिंपल एंड स्ट्रेट, राइट? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या ही करना है इसमें। एकदम मस्त बच्चा, वेरी गुड, सिंपल एंड स्ट्रेट, ग्रेट गाइस, ग्रेट। आई एम रिसीविंग आंसर फ्रॉम यू, इट्स वंडरफुल। ऐसे क्वेश्चन ना वर्बली होने चाहिए बच्चा, ऐसा देख के सलाह, ये आंसर होगा सर, ये आंसर होगा, लाइक दैट वी शुड गो। ओके, कैन यू ट्राई दिस? ये भी वर्बली होना चाहिए। 1 RPM इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन पर सेकेंड? ये भी वर्बली होना चाहिए। 1 RPM इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो 120 RPM कितना हो जाएगा जनता? खत्म कर दो यार, क्या ही करना है। कौन सा आंसर? यस, वेरी गुड अरहम, वेरी गुड अनुष्का यादव, वेरी गुड एवरीबॉडी, क्या बात है, मतलब छा गए गुरु। राइट सुहानी, वेरी गुड, वेरी गुड पीपल, वेरी गुड। स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने आपको कुछ कुछ एंगुलर वेलोसिटीज लिखाए थे, जस्ट इन केस इफ यू नो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड कितना होता है बच्चों? सेकंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 पाई डिवाइड बाई 60, बिकॉज 60 सेकंड में खत्म करता है वो, तो हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। ये लिखा था क्या? हाँ, ये लिखा था, तो इससे तो हो जाएगा ना। मिनट हैंड का बताया था आपको, मिनट हैंड 2 पाई बाई 3600। ओके महक, राइट अल्लाह। अर्थ के लिए क्या हो जाएगा? अर्थ कंप्लीट्स इट इन 24 आवर्स, राइट? करेक्ट है, ये सब लिखा है हुआ आपको, तो यहाँ से तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। कौन सा आंसर आ जाएगा प्लीज? ऑप्शंस आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। व्हिच आंसर? व्हिच वन इज द आंसर? क्विक गाइस, क्विक, 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 क्विक। ए बी सी डी, ए बी सी डी, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए।
1 is to 60 people. Which one will move faster? Which one will move faster, guys? Second hand or minute hand? Obviously, second hand should move faster. Second hand should move faster. A दिख रहा है आंसर? अभी अभी तो लिखा था यार. कौन सा ऑप्शन ए दिख रहा है सबको? एक सेकंड हैंड कितने टर्न कर लेगी? 60 टर्न कर लेगी, तब जाके मिनट हैंड का एक टर्न होगा. करेक्ट और नॉट? राइट. मैं जोशी समझा आपको कि नहीं समझा? ओके मैं ग्रेट ग्रेट. चलिए फिर चलते हैं आगे. क्या ही करना है. बस अब थोड़ा सा स्किप करेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे. कैन यू ट्राई सॉल्विंग दिस पीपल? कैन यू ट्राई? मुझे चाहिए इसका आंसर. एवरीबॉडी, whether you're from NEET or JEE, I want answer of this from everyone. फटाफट फटाफट आंसर. Quick answer, guys. Quick answer, everybody. Quick. Okay, that's right. Anushka Yadav, your answer is correct. Omega is equal to होता है d theta by dt, rate of change of angular displacement. आज भी लिखा था. तो omega will be equal to d by dt of at plus bt square plus ct cube. This will give you a plus 2bt plus 3ct square. अब अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी. तो डी बाई डी टी ऑफ ए प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर. अब ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1, सो खाली 2b और ये जाएगा 6ct. बट टाइम कितना बोला है? टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? But are you sure? Right, Nakira? Can you understand this? Simple, straight, clear? Can we go ahead? Shall we go ahead with it? Easy peasy? Simple, simple? Can we proceed? Shall we proceed?
Fantastic, guys. Good. Let's see. I'll be sending you questions on this, which will be helpful to you. We'll skip this. Yeah, this is also a good question, a standard question. Can you try doing this? Can you try doing this, guys? Which one is the answer, guys? Which one is the answer, everyone? इसका आंसर आपको पता हो ना हो, इसको लिखना चाहिए. Okay? This is a standard answer, people. If two vectors are equal, तो आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? पता है क्या? अगर वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b है, तो वेक्टर d का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? ये होता है स्क्वायर रूट के अंदर मॉड ऑफ a स्क्वायर, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, mod of b square मतलब वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस 2 times mod of a mod of b cos theta. Do you know this? अब अगर mod of a और mod of b दोनों इक्वल है, which is equal to v, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट बोला है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा. v को बाहर ले लेता हूं, राइट. यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा. मैथ्स वालों, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ा होगा, राइट. 1 माइनस cos थीटा क्या होता है बच्चों? 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Theta अनुष्का, theta by 2. So this will be equal to v square root के अंदर 2 into ये हो जाएगा 2 sin square theta by 2. अब तो आंसर दिख रहा होगा भाई, अब तो आंसर दिखना चाहिए. दिख रहा है आंसर? कौन सा दिख रहा है आंसर? हाँ जी. तो ये जिसको भी पता नहीं था उसको लिखना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट. जिनको भी पता नहीं था ये, उनको लिखना चाहिए बच्चों.
Done everybody? Can I go ahead? Shall I go ahead? याद रखिए स्पीड चेंज नहीं हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है. कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर 0 भी बोलते हैं बट वो तो ठीक नहीं है ना, राइट? स्पीड नहीं चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है. करेक्ट है ना? कैन आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड एवरीबॉडी? राइट एवरीवन? डन? डन एवरीबॉडी? Guys, are you done? Can you tell me, please? Okay, let's proceed. Great, fantastic. People who have not written should write down this. Can I proceed? Shall I proceed, everyone? Great. Okay. Let's leave this. Leave this. Oh, नहीं, पिछला वाला अच्छा था. ये जरूरी है. ये अच्छा है. ये भी conceptual है. Can you try this? Can you try this, everybody? And tell me the answer quickly, quickly. Conceptual है. Are we done, everybody? Are we done, everyone? देखिए इसको कैसे करते हैं. ओके सुहानी, गुड. देखिए बच्चा, इसका वेलोसिटी तो उतना ही होगा, राइट? इसका v तो उतना ही होगा. तो ओमेगा अबाउट a विल बी इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस तो 2r है ना, राइट? ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r होता है बच्चों, पता है आपको? और ओमेगा अबाउट c हो जाएगा v बाय r. तो ये इसको अगर रेशियो ले लेंगे ओमेगा a बाय ओमेगा c से, इन दोनों को यूज कर लीजिए. ओमेगा a डिवाइड बाय ओमेगा c, व्हिच वन इज द आंसर गाइस? Which one is the answer, everyone? हाँ जी, दिख रहा है सबको कैसे सॉल्व करना. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों. अगर पता नहीं था तो लिख लीजिए. इफ यू डिडंट नो प्लीज राइट इट डाउन.
Are we good? Are we clear? Can I go ahead, people? Can I go ahead? Okay, guys, let's proceed. Okay, good. Let's go for now some good concepts. Let's study a little bit of concept today. Lot of questions for objective type to be practiced, people. Before you get into, I hope you enjoyed solving questions. Now we'll go to the theory part. Okay. So a lot of questions. Basically, we keep planning so that you get comfortable with the questions, guys. Let's talk about centripetal force and centrifugal force. Let's talk about centripetal force and centrifugal force. I hope you are able to understand everything, every basics. If you do not, feel free to ask. There are various mechanisms you could ask us. So that is like chat, putting on your mic, or you could also send your questions through your other teachers. So what is centripetal force, people? The name is confusing. Okay, the name is confusing. What is centripetal force? Let's talk about it. Centripetal force, student thinks that it is a force. No, it is mass into acceleration. What is the difference? You'll say, sir, but force equal to mass into acceleration होता है. हाँ, बात सही है. But force is the cause. Acceleration is the effect. साइंस का पहला प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट. एक मास है, अपने आप मूव नहीं होगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर है, मतलब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. इसका मतलब कोई तो फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट करेगा. Okay, so centripetal force is not a force, it is a requirement of force. What I mean to say is, if an object is going in circular motion, guys, तो उसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, राइट. डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग. जैसे यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी था, यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी है, यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी. तो कोई तो है जिसको सेंटर की तरफ पुल कर रहा है. तो सम फोर्स हैज टू एक्ट एज सेंट्रिपेटल फोर्स. आप जानते हैं हमारे नेचर में खाली 3 टाइप के फोर्स है, राइट. डू वी नो? डू वी नो दैट, पीपल? In our nature, there are only 3 types of force. Do we know or no? Don't. Which are the 3 types of forces that are there in our nature? Which are the 3 types of forces there in our nature? No, Mac. No. 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 That's right, Anushka Yadav. Good. Only 3 forces in our nature: gravitational force, gravitational force, electromagnetic, और न्यूक्लियर. अब हम न्यूक्लियर के अंदर तो जाते नहीं है, राइट. न्यूक्लियर के अंदर तो जाते नहीं है. अच्छा, अभी इसको भी तो कोई बोलेगा इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, तो उसको बट क्यों ही करना है, मतलब व्हाई डू वी डू दैट. अब इसमें भी 2 होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. तो 5 बोल देंगे, वो क्या ही फर्क पड़ता है. मैं 3 ही बोलूंगा, चलेगा. बट हम न्यूक्लियर के अंदर तो होंगे नहीं, तो कितने फोर्स बचे? 2. तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई सेंट्रिपेटल फोर्स के तरीके से काम करना पड़ेगा. इन दोनों में से कोई ना कोई सेंट्रिपेटल फोर्स जैसा काम करेगा. कैन यू अंडरस्टैंड दैट, पीपल?
इन दोनों में से ही कोई सेंट्रिपेटल फोर्स, जैसे व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स which is acting as centripetal force, correct? It is the gravitational force which is acting as centripetal force. Do you understand, people? Right? When electron is revolving around nucleus, it is the electric force which is acting as centripetal force. Do you agree with people? Do you understand, people? Right, everybody? Wonderful. So it is not a force, it is a requirement of force. Some force has to act as centripetal force. इसका expression ध्यान रखिएगा, ठीक है? जिनको लिखना है लिख सकते हैं, else take a screenshot and move ahead. Can I go ahead? Should I go ahead? Fantastic. चलिए आगे चलते हैं. People, ये properties of centripetal force लिख लीजिए. One of the most important properties, this force does not do work. ये लिखिए. Questions आते हैं कभी कभी. Are we done, everybody? Can I proceed? Shall I proceed? Fantastic, guys. Done? Perfect. Properties लिख लीजिए सारे के सारे लोग. Let me know once you're done, guys. Can I go ahead, people? Shall I go ahead? Okay, guys. लिख लिया, आगे चलेंगे.
Like here, gravitational force is acting as centripetal force. Gravitational force is acting as centripetal force. Hopefully, you can understand. So it is not a force. It is a requirement of force, people. It is not a force. It is a requirement of force. Some force has to act as centripetal force. अभी एक बार हुआ क्या पता है? मनीष मिश्रा, सुमेश मिस्त्री, फिर बाद में ऋषभ, आयुष देवकर, आकाश और आदित्य पाटिल, ये लोग घूमने गए था ना मेरे गो राउंड पे, थोड़ा मस्ती कर रहे थे। तो कुछ ऐसा चल रहा था सीन। आदित्य पाटिल ने बोला मैं फास्ट घुमाऊंगा सबको, बहुत फास्ट घुमाऊंगा। तो आदित्य पाटिल वाज लाइक आउटसाइड, सबको फास्ट फास्ट घुमाने की कोशिश कर रहा है, और हुआ क्या, ये हुआ। Centrifugal force does this to you. Aditya Patil, be careful next time, right? Right, everyone. Fine. So if you keep on increasing speed, beyond a certain point, what will happen? It will push you outside because of that, right? And this is what would happen. Anyway, what is centrifugal force? It is a pseudo force. You know what is a pseudo force, right? You know what is pseudo force. Do we know that? Right, Sahil. It is a centrifugal force, people, which is a pseudo force, right? It is a pseudo force, guys. Pseudo force. Pseudo force के बारे में, what you need to know about pseudo force. You know what is the difference between real force and pseudo force, people? Do you know the difference between real force and pseudo force? Do we know the difference between real force and pseudo force? Do we know the difference between real force and pseudo force? What is a pseudo force? What is a pseudo force, people? Anyway, people are not responding. I'll go ahead. अनुष्का पता नहीं बेटा, डायरेक्टेड आउटवर्ड। एनीवे, ठीक है, चलेगा, हम इस पे बात करेंगे बाद में। इसको लिख लीजिए प्लीज, मैं आगे चलूं। ओके, ठीक है, हम स्किप करेंगे इसको। Now let's go for angle of banking. Let's talk about angle of banking. So people, if you want to go on a curved road, okay, if you want to go on a curved road, सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है बच्चे? फ्रिक्शन, राइट? राइट, फ्रिक्शन हेल्प्स यू। बट अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो राइट, द कार वुड कोलाइड। सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी, इट विल मूव आउटसाइड। डू यू गेट इट, पीपल? Do you understand, people? Do you understand? Easy peasy, right, everyone? So you need centripetal force. Centripetal force, आपको बताया था, it's a requirement of force. Some force has to act as centripetal force. So the friction is helping you to take the circular turn. तो आप बोलेंगे भाई centripetal force should be provided by friction. This is the maximum speed with which the car should take turn. Correct, everyone? इसका expression लिख लीजिए. This is centripetal force is provided by friction. का expression. Centripetal force is provided by friction.
डन पीपल, ग्रेट, राइट पीपल। चलिए अब एंगल ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं। तो मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ बैंकिंग। तो अनुष्का यादव बोलती है सर, वो बैंक में जाके ना हम जिस एंगल पे झुक के पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। एकदम सही है ना बच्चों? राइट अनुष्का, ऐसे ही बोला था ना आपने? एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब बैंक में जाके कितने एंगल पे आप वो यू नो बैंक में एटीएम में गए तो ऐसा कैश निकालने के लिए सब बेंड होना पड़ता है ना, राइट? कैश निकालने का ऐसा बेंड होना पड़ता है ना, तो दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग। मतलब ठीक है। अनुष्का, आई होप यू डोंट माइंड, आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मस्ती, आई होप इट इज ओके फॉर यू। चलेगा ना थोड़ा सा? राइट अनुष्का, आई होप यू डिडंट फील बैड अबाउट इट। ओके, गुड गुड। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट? चलिए पीपल, एंगल ऑफ बैंकिंग, लेट अस स्टडी दिस। देखो बच्चों, फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशन। मतलब सरफेस का क्या कंडीशन है, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सरफेस थोड़ा स्लिपरी हो गया बिकॉज ऑफ वाटर, मड, और किसी कार का ऑयल लीक हो गया, तो फिर फ्रिक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फ्रिक्शन बेस रिक्वायर्ड। साहिल, साहिल बारिश के सीजन में कभी स्कूटी से स्पीड में टर्न लेके देखो, दांत टूटेगा, हाथ टूटेगा, राइट? क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली फ्रिक्शन विल डिक्रीज ना। तो इसीलिए टू टेक केयर ऑफ इट वी बैंग द रोड ऑल्सो। फ्रिक्शन जनरली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर कंडीशन। और गाड़ी भी टूटेगी, ये भी ठीक है, ये भी सही है, आराम की बात है, सही है भाई, गाड़ी तो टूटेगी। और फिर घर जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या टूटेगा, मतलब हमको लगा और घर वाले और धोएंगे इनको, नुकसान करता है, टिश्यू टिश्यू, राइट? सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। चलेगा चलेगा। द रोड्स आर बैंक्ड, इसको हम थोड़ा सा बैंक करते हैं, ठीक है? तो इसका एंगल की बात करेंगे, वेरियस फोर्सेस की बात करेंगे। डोंट वरी, ये ऐसा कुछ होता है रेसिंग ट्रैक। हैव यू सीन इट पीपल? रेसिंग ट्रैक्स हैव यू सीन? देखा है आपने रेसिंग ट्रैक जैसा कुछ, राइट? ये रोड को बैंक क्यों करते हैं? बिकॉज दे टेक अ टर्न एट अ पर्टिकुलर स्पीड, सो ऑन सो फॉर्थ। चलिए इस स्पीड को डिराइव करेंगे बच्चा, ठीक है? इसको हम डिराइव करेंगे बच्चा, डिराइव। नहीं पार्थ, अगर आप मुंबई से नासिक की तरफ आओगे या पुणे की तरफ जाओगे, तो जो घाट का रोड है ना बेटा, वो भी बैंक्ड है, नोटिस कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नोटिस, इवन द घाट का रोड इज बैंक्ड स्लाइटली एट एन एंगल, देखिएगा। हाँ जी साहिल, बिकॉज सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? Safety is more important. So they will keep the road banked at a particular angle. चलिए guys, let's proceed. अभी इसके लिए सारे के सारे FBD बना लीजिए प्लीज, प्लीज ड्रॉ ऑल द FBDs, ऑल द फोर्सेस। अभी ये FBD बहुत जरूरी है। FBD आई होप आपको पता है कैसे बनाते हैं। FBD का हिंदी होता है बच्चों मुक्त वस्तु चित्र, राइट? फ्री बॉडी डायग्राम। May I go ahead? Shall I go ahead?
Right, everybody? Everybody बना लीजिएगा, please. Can I go ahead, people? Shall I go ahead? Please write down the expression. Okay, okay. Please, फटाफट सब लोग लिख लीजिए. Please respond, everybody. Done, बच्चों. चलिए आगे चलते हैं. Let's proceed, everybody. Right, everyone? अब क्या करेंगे? n को कैंसिल कर देंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n को कैंसिल कर दें. Fast, fast, everybody. Let me know once you're done, everyone. Great, guys. Great. Let's cancel n. Let's cancel n, everyone. तो cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. Divide numerator and denominator by cos theta. Please keep writing, everybody. Can I proceed, people? Shall I proceed? Done? May I go ahead, everybody? So far, so good? All right. Okay, Suhani. Great. This is the final expression. Please write it. ये Vmax का है. Vmin में क्या होगा? Mu खाली नेगेटिव हो जाएगा. We'll talk about it.
Okay, now have a look at this, people. Have a look at this. Vmin. Vmin is equal to square root of Rg. खाली म्यू नेगेटिव हो जाएगा तो tan थीटा माइनस म्यू एस होल डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. दोनों एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा प्लीज. ठीक है बच्चों. सबने लिख लिया. ग्रेट. चलिए चलते हैं आगे. Can we go ahead, people? Shall we go ahead? Fantastic. लिख लिया आपने. अब इसके दो केसेस की बात करेंगे. एक बार म्यू जीरो होगा, राइट. रोड इज नॉट बैंक तो थीटा इज जीरो. तो थीटा इज जीरो तो क्या हो जाएगा? म्यू आर जी हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड पीपल? And people, proceed to the next point. If the road is smooth, mu is zero. तो आर जी tan थीटा हो जाएगा. दोनों केसेस ध्यान रखिएगा प्लीज. Remember, this is independent of mass. यहाँ पे mass का कोई टर्म नहीं आता. Okay, this is independent of mass. I hope you understand that. I hope you're done with this, people. Are you done? Are you done, everybody?
Done, guys. Done, done, done. Fantastic. ये दोनों cases हो गए हमारे. Good. This does not depend on mass of the vehicle. I hope you're able to see it and connect with it. Right, everybody? Easy peasy? Easy peasy? Perfect, everyone. So, one question and we'll stop for today. See, first thing you should do in such questions is convert this into meter per second. Convert this into meter per second. Very important. Convert this into meter per second. यहाँ पर आपको रेडियस दिया हुआ है, करेक्ट? जी का वैल्यू दिया हुआ है. तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों? tan थीटा is equal to v square by rg. Can you do that for me? Quick, guys, quick. I want answer from everyone. I want answer from everyone. Are you done, everybody? What is the answer for this? What is the answer for this? Quickly, quickly, quickly. Convert it 5 by 18 multiply करते हैं. Do you know that? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए you multiply by 5 by 18. Do you know it, people? Do you know it, everybody? You should. Right? If you substitute, you're going to come across tan inverse of 0.5, which is roughly 26 degree 34 minutes. Write it and we'll stop here for today, people. Write it and we stop here for today. Okay, sure, sure. Swani, I'll show the question again. People, Swani is asking for showing the question again. Let me show you the question. Here is the question. Please write. Okay, Swani.
Are we done, people? Okay, so we'll stop for today. Bye everyone. Take care. See you. Bye bye, bacho. Have a great day ahead. Bye everybody. Bye people. Have a great day. See you. You'll get our questions also today. Bye everyone.